ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हां, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हां, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello and good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by the management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Today, we have a brand called Great Capital. Great Capital is a platform focused on secure digital asset investment designed for ease of use and professional management. Its mission is to empower every user to grow their wealth through managed digital asset portfolios. To talk more about this brand and the business opportunity, we have Vibhor, Anubhav. We also have Rahul Sharma from Franchise India, the VP Sales, and we are also joined with Dharminder Rathore, our channel partner, and we will also have Ashok ji from the consulting team. But before we talk more about the brand and showcase the business model, I would like to inform all the viewers that you all will have the opportunity to ask questions related to the business and the business model. I will request you all to please keep on posting your queries into the Q&A box so that we can come back to you with the answers. So we will take up all your questions post the brand presentation. Now I would like to request Rahul Sharma to take the lead and set the context of this webinar. Thank you so much, Bharat, and good afternoon, everyone who joined with us through this webinar as well as YouTube and the Facebook. So, being a franchise in India, we are the part of number one in the franchisee sales in India and the international market. Today is our one brand where you think that if I want to invest, what the return is, and you can get all this information in next 30 minutes. Along with us, we have a brand team member, Mr. Ratif and Vibhor, who will be closely working on this brand. They have made a huge success story. And being a franchise India, we always give a right information to the investor why they want to take the franchisee. On the franchisees, there what support system is from the brand side, how we have to help you in terms of the agreement and all the other aspect. So when the deal is done or when the payment is transferred to the brand team take care of. Even the franchise India will also guide you what is your role and responsibility while taking this brand and what is the brand responsibility. So next 20 to 25 minutes, we will share you the complete brand information. What is the brand, what is their journey, what investment you are keeping it, while you are keeping what is an ROI, what is the tenure. Apart from that thing, if you have any questions, you can put into your Q&A box. From our team, we can help you and give you the solutions. Once the webinar is over, the Franchise India team is present who can closely work with you. They can give you the right and they can discuss with you. Even they can also meet you because a lot of times the people want to meet. So we are present to various parts of the country. Our teams are there who can help you in that part.
Over to you, Atif ji, Vibhor ji, can we start on that part? Athavinder ji, you want to add something then? Hi, good afternoon, everyone. Yeah, please go ahead. Hi, good afternoon, everyone. My name is Vibhor Agarwal, and I'm the Director of Business Development and Great Capital. And with me, my co-founder, Mr. Anubhav Agarwal, who is the CEO of the company, and Mr. Atif Ahmed, who is from the legal background of the company. So आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे सेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो मैं एक हिस्ट्री से शुरू करता हूं पहले कि इंडिया की फाइनेंशियल बैकग्राउंड की हिस्ट्री क्या रही है अभी तक। सो I think there's some net. I think there seems to be some problem with the internet. Yeah, I know. So you can also share your screen, guys. Atif, Ashok ji, anyone can also share your screen in terms of the presentation. There's some internet glitch from the Vibhor side. Let me try. Does anyone have the PPT? Hold on. is there a problem? No, you can. There, I think you want to, but there's some network from your side. I think you want to share. You want to start with. Okay, network stable from everybody's side. Yeah, Vibhor, Yes. we can hear you, but I mean, The camera is off, so let's start. I think the network issue that I have just switched off the camera just because of that. Sorry about that, guys. All right, shall I start? Yeah. So as I was saying कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लॉन्च की तो उससे मार्केट को ओपन कर दिया गया। बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में बहुत प्रॉफिट्स कमाए। लेकिन आज तक वैसी तेजी स्टॉक मार्केट में नहीं देखी गई है। पर आज कुछ सालों बाद, 33 साल के बाद, आज ऐसी तेजी देखने को आपको मिलेगी क्योंकि एक ऐसा सेक्टर इमर्ज होने जा रहा है मार्केट में जिसका नाम है डिजिटल एसेट्स, जिसके बारे में आप हमसे अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो जून में जब हम मिस्टर दीपक यादव से, जो सीईओ हैं फ्रेंचाइज इंडिया के, जब हम उनसे मिले थे इस प्लान को लेकर, जब हमने अपनी कंपनी के बारे में उनको बताया था और इस सेक्टर के बारे में बताया था, तो उन्होंने पूरी डीप रिसर्च की और आज वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है इस बारे में कि ये सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। राइट। तो थोड़ा सा मिस्टर अनुभव अग्रवाल आपको डिजिटल एसेट्स के बारे में नॉलेज देंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि डिजिटल एसेट्स आज होते क्या हैं। Over to you, Anubhav. Sure. Thank you very much, Vibhor bhai. So, hi everyone. Sorry, actually मेरी बात हो रही थी टीम से. I am having a really bad throat today. I hope I won't be irritating you guys with this. So, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री से शुरू करते हैं. सो आप में से काफ़ी लोग जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं, आप लोगों को एक नॉलेज होगा, एक आइडिया होगा कि ईयर 1990 इंडिया की हालत बहुत खराब थी. सो एट वन पॉइंट वी ओनली हैड 2 weeks ऑफ फॉरेन रिजर्व टू मेक आवर ऑयल पेमेंट्स. इस सबको देखते हुए ईयर 1991 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इंडिया में लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया. लिबरलाइजेशन आने से इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक सडन बूम आया. Despite the scams like Harshit Mehta scam and everything, investors ने उस 10 साल में 1991 से लेके अर्ली 2000 तक स्टॉक मार्केट में जैसी रिटर्न बनाई वैसी आज तक नहीं बना पाए. सो जैसा अब ट्रेंड, जैसा बूम उस टाइम पे आया था, आया ही नहीं है. इस बात को 33 साल हो चुके हैं, 33 years. सो राइट नाउ आफ्टर 33 years, 1.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक नए सेक्टर को लीगलाइज किया इंडिया में, जो कि एक सिमिलर टाइप या उससे भी बेटर बूम की पोटेंशियल रखता है, विच इज डिजिटल एसेट्स. सो आज की डेट में डिजिटल एसेट्स, अगर आप में से किसी ने रिसेंटली अपना आईटीआर फॉर्म फाइल किया होगा, आपने देखा होगा कि सेक्शन 36 न्यू सेक्शन हैज बीन एडेड विच इज डिजिटल एसेट्स. जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफडी, इन सबको अपने आईटीआर फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, सिमिलरली अब डिजिटल एसेट्स को भी आप अपने आईटीआर फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसके साथ में इंडिया में एक नया डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है इसके लिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU, जिसका काम है डिजिटल एसेट्स कंपनीज को लाइसेंस देना, उनके ऊपर वॉच रखना,
साथ ही साथ जब भी आप डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड रहता है। सो एवरी ट्रांजेक्शन दैट यू डू इन डिजिटल एसेट स्पेस वो आपके पैन कार्ड सेक्शन में, टीडीएस सेक्शन में हर एक क्वार्टर में रिपोर्ट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। सो इन्वेस्टर इज फुली एंड टू एंड प्रोटेक्टेड एंड दिस फैक्ट इज जस्ट वन गूगल सर्च अवे। आप इसको गूगल करके पता लगा सकते हैं कि डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स पिछले 15 साल से हर साल 100% एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, विच आउट परफॉर्म्स द स्टॉक मार्केट रिटर्न। एंड उसकी वजह से कुछ लोग हमारे पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा सेफ है। वेल इसका आंसर शॉर्ट में होता है यस, बट टेक्निकली उस यस का कैसे यस है वो हम आपको आगे इस प्रेजेंटेशन में समझाएंगे। सो if we have Ashok ji AV of the introduction video, can we play that? Yeah, sure, please. You can play the video. Ashok ji, it is handy with you. Can you play the video, please? I'll just do it. Wait. Sure. Go by. And also there is a request if you could speak in English only. All right. क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश के दो शब्द रिच और वेल्थी में क्या अंतर है? रिच वो है जिसके पास पैसा है और वेल्थी वो है जिसके पास पैसा और समय दोनों है। वेल्थी व्यक्ति काम न भी करे तो भी उसके पास इनकम के कई सोर्सेस होते हैं। फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के लेखक बताते हैं कि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने दो तरीकों से धन निर्माण किया है। किसी इकोनॉमिक डिसरप्शन को समझकर, जैसे 1992 का भारतीय शेयर बाजार बूम या पोस्ट कोविड पेंडेमिक बूम, किसी उभरते हुए सेक्टर में अर्ली इन्वेस्ट करके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हेल्थ टेक। और अब एक ऐसा सेक्टर उभर रहा है जो एक इमर्जिंग सेक्टर और इकोनॉमिक डिसरप्शन दोनों है। यह सेक्टर पिछले 15 साल से 100% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स तो दे ही रहा है। साथ ही इस सेक्टर में वर्ल्ड के लगभग सभी बड़े बैंक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस सेक्टर का नाम है डिजिटल एसेट्स, या जिसे हम इंडियन वर्चुअल एसेट्स भी कहते हैं। पूरे भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन है और अकेले $10.5 ट्रिलियन मैनेज करने वाली कंपनी ब्लैक रॉक, जो जियो फाइनेंस की भी 50% मालिक है, इस सेक्टर के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हम भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस सेक्टर को रिसेंटली इनकम टैक्स फॉर्म में ऐड कर दिया गया है, यानी म्यूचुअल फंड्स, एफडी स्टॉक्स के साथ अब से यह उभरता हुआ सेक्टर भी हमारे आईटीआर फॉर्म का हिस्सा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही इंडियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर नजर रखें और उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करें। हाल ही में हुई G21 मीटिंग में सभी देशों ने एक साथ मिलकर इस सेक्टर के लिए और भी नई पॉलिसीज बनाने की सहमति लिखित में जताई। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की स्टॉक मार्केट पर डिजिटल एसेट्स ETFs भी लिस्टेड हैं। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर यह सेक्टर इंडिया में काफी तेजी से विस्तार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके हम कैसे वेल्थ जनरेशन कर सकते हैं। क्या Sure. Thank you very much, Ashok ji. Right. So, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिजिटल एसेट स्पेस के बारे में, एक क्विक वीडियो आपने प्ले किया। इसके अलावा मैं एक्सप्लेन और भी करता हूँ इस कंसेप्ट में। सो आई रिमेम्बर जून में 2024 में जब हमें कंसेप्ट लेके आए दीपक भाई के पास, CEO ऑफ फ्रेंचाइज इंडिया। सो ही वाज प्रीटी स्केप्टिकल, उन्हें शक था कि क्या है क्या नहीं है। देन वो 2-3 दिन तक या एक हफ्ते तक हमारे लाइसेंस भी सब कुछ ड्यू डिलिजेंस करते रहे। वी टोल्ड देम दैट वी ऑलरेडी गॉट द ऑफर फ्रॉम वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लूमबर्ग
to partner with us in India. तो सब कुछ वेरीफाई करके एट आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि आज की डेट में दीपक भाई इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन अस अबाउट दिस इंडस्ट्री, अबाउट दिस बिजनेस मॉडल. सो मूविंग ऑन अबाउट द डिजिटल एसेट्स, आपने ध्यान दिया होगा वीडियो में एक जगह हमने मेंशन किया है कि जो जियो फाइनेंस की 50% ओनर कंपनी ब्लैक रॉक इज राइट नाउ वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर इन डिजिटल एसेट स्पेस. सो दिस इज अ वेरी मच नोन फैक्ट कि हमारा इंडिया जो है वी आर ऑलमोस्ट 10 to 15 years बिहाइंड फ्रॉम यूएस इन इन्वेस्टमेंट स्पेस. तो राहुल जी, यू आर सेइंग समथिंग, योर माइक इज म्यूट. No, no, I don't want to say. You can continue. सो आज हम इंडिया में ईटीएफ्स, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पे जोर दे रहे हैं, बट दैट इज ऑलरेडी द आउटडेटेड कंसेप्ट. यूएस और सभी एडवांस इकोनॉमीज, अगर आपके वहाँ कोई रिलेटिव्स हैं, यू शुड चेक विद देम, दे हैव ऑलरेडी मूव टू द डिजिटल एसेट स्पेस व्हिच इज नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो जैसे स्टॉक मार्केट आया, म्यूचुअल फंड आया, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है, वो रिस्क समझते थे इसमें, वेयर एज देयर इज नो रिस्क बट वॉलेटिलिटी. दोनों वर्ड में काफी डिफरेंस है. सो इसी एक नॉलेज गैप को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि डिजिटल एसेट स्पेस क्या है, वो कैसे इससे इन्वेस्टमेंट बना एक अच्छा फॉर्चून बना सकते हैं. सो इसी को समझाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा विभोर भाई, इफ यू कैन टेक अस थ्रू अ बिट मोर अबाउट द डिजिटल एसेट स्पेस, और योगेश भाई इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देन वी विल मूव ऑन टू द Yeah, प्रेजेंटेशन. go for it, Mr. Yogesh. Thank you. Yogesh ji is available on. Yeah, I can see him on the list. Yeah. Just give me a moment, I think. Anubhav, Yogesh ji is available. I Or think should I carry on with the PPT? yes, Vibhor bhai, you should start with PPT. Once Yogesh bhai is back, he will be joining. Yeah, all right. Thank you. My screen is visible. Yes. 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 Yeah. All right. So here we talk about the finance and investment sector, which is the market leader by 30% out of all the sectors. Second sector, if you guys can see, is the real estate sector. So 30% coverage of the market is by this kingmaker sector, which is called the finance sector, finance and investment industry, right? Rest other sectors are followed by this sector of India. So if we talk about the industry side, so retail investment has a size of more than 475 billion US dollars. And the following sector, education sector, restaurant and gym sector, in which normally the franchise are made in India. There is a great hype of restaurants. Every day the chains of restaurant, gym and education sectors gets open and closed, but people are not able to get that ROI. And there are huge investment in these sector. And to run these sectors to have a success in that, the people have to open up a lot of franchises. But here in retail investment sector, first of all, the limitation which you eliminate is that you can operate from anywhere in India, right? You don't have a fixed inventory or a office space, just like the restaurant, education or gym sector. So coming upon the competition part, franchise competition and retail investment, if you talk about the other financial background sectors, just like mutual funds, stockbroker,
wealth management, or digital assets. So we have set a decent comparison here. So if you can see, so mutual fund has like 44 companies. The competition level is medium, right? Stockbroker, 100 plus companies, very high competition. Wealth management, very high competition. But if you talk about managed digital assets, so Great Capital is the only company registered with India, right? And FIU registered, which is actually providing you the franchise opportunity, and which is also providing a good opportunity to the investors to create a basket of digital assets and invest in them. Moving ahead, digital asset has been a very much performing asset. Anubhav, if you would like to take it from here, because you would be able to explain how digital assets have been moving ahead of mutual funds and stock index. Absolutely, absolutely, Vibhor bhai. Dharmender ji, shall I proceed in English or Hindi? What is the preference of most of the audience? I think I think English should be better. you should proceed in English only. Okay, So that is we absolutely. have people with a different language. I get you, Dharmender ji. Vibhor bhai, can we start with the very first page of the presentation? Please go ahead. Yeah. Yes, thank you. So, if we see the most of the millionaires in India, which industry do they belong to? Nearly 30% of them are only from the finance and investment place. Then comes the 20%, which is real estate, followed by other sectors 15, 12, 8, 7, and 8. So, which makes us very evident that the kingmaker or the a millionaire maker in India is the investment industry, particularly. Next slide. Vibhor bhai, next slide. If I give you a very quick comparison about the industry size, basically the franchise size, just to get the better understanding, which franchisee is the best for you. So Jim is having approximately $3 billion of industry size in India. When we come to restaurants, majorly the Horeca, it comes close to $100 billion. Education industry, another $110 billion. But the retail investment alone, as per the 2023 report, is more than $500 billion. It is double the more than all these industries combined altogether. Next slide. So that is very much fine. Retail investing is the kingmaker. It is making millionaires. The industry is very, very much huge compared to all the other industries in India. But what is the competition that it looks like? So in retail investing, we traditionally have three sectors: mutual fund, stockbrokers, and the wealth managers. The comparison is as follows: 44 companies in mutual fund, competitions medium, stock and wealth management, 100 plus companies, but with a very high competition. So supposingly, if you go with the franchisee of any of these, it is very much highly probable that your city might be having 10 or 15 franchises of any other brand in this particular sector. So, as I already mentioned, digital assets is the next frontier. So, if you look at the competition here, right now, no one is there in India, at least in the registered and the license format. So, Great Capital is the very first company which is doing this thing in the licensed and the compliant way. So, the competition is low or the non-existent altogether. Next slide, Vipur. So if I give you very quick comparative, last 10 years, from January 2014 to January 2024, if we compare the returns, annualized returns, gold approximate 11%, stocks, NSE, so Nifty 50, we took it here, which is 13%. Then mutual funds combined, which is equity based plus debt based mutual fund, approximately 15%. Now combine all these together and still digital assets beat all these return by a huge margin, more than 100% since last 15 years. Next slide, Vibhor bhai. So for us Indians, it's a matter of great pride and the opportunity that digital asset space has recently been added to the ITR form 2 and 3 and the company's form. You can see the screenshot here. So the government itself might have thought something about this sector that they added to the ITR form. I think if I can recall from my correct knowledge, it's been 15 years
like since we have addition of any new investment sector in our IDR form. And the digital asset space was the very last one, which was added by the Indian government. Next slide, Vibhor bhai. The previous one. Yes. Yes, thank you. So to keep a watch on all the activities related to digital asset, India has set it up financial intelligence unit. So FIU was long there, but recently they got the responsibility to overlook the licensing and the activities into this sector. And rumors are there, most likely IRDA, which is Insurance Regulatory Department of India, Authority of India, and SEBI, both of them will also be joining the party. They will also come and help regulate the digital asset space, further strengthening the digital economy of our nation. Second slide, Vibhor bhai. Yes, as I mentioned earlier, whenever you do a digital asset transaction, it is directly reported to your PAN card. So, if you are working not with just Create Capital, but with any other licensed company in India, you are rest assured, like frauds are next to impossible. Because once the transaction goes through your PAN card, it is reported in your PAN card, then it's the government's responsibility to overlook at the things if anything goes wrong. And you are the one who just have to make the investment decisions. Next slide, Vibhor bhai. Okay, I'll give a very quick comparison here. The type of franchises we have: digital assets, education, gym, and food. Like education, gym, and food are the kind of franchises which are hot selling at the moment. So we compare each point by point. So capital required digital asset franchises, it requires the least amount of capital to start. ROI, I'll give you just for a quick understanding, approximately 250 to 500% recorded ROI for franchises in the first year alone for the digital asset space. Inventory, since there are no perishable item in digital asset space, so you don't have to risk the inventory things. Competition, as we previously saw, there is no competition at the moment in India. And the best part, the digital asset franchises are completely online. You can have a office space, but if you want, you can take it complete online as well. Next slide, Vibhor bhai. So if I talk about some very, very quick numbers, 350% franchise ROI every year, and it is the recorded number at the lower level. Some franchises are even doing 550 to 600% ROI easily every year. Then this industry is growing at 107% growth rate annually. There's no competition, no inventory challenge, as I just stated, and there are no off seasons. Every season, investors are there to invest the money. Next slide, Vibhor bhai. So if I give you a very realistic example of some of our already running franchises. So 2 lakh rupees is the average ticket size. And this is for the reason that once the franchise is there, we do not sell anything. We just educate them about the industry and leave the decision up to them. 70% is our lead conversion rate. So every 100 people come, 70 end up actually investing with the franchisee. So if I take the example of 25 average leads per month, 70 of them converting as per 70% conversion rate, taking the AUM, average AUM of 2 lakh rupees, 34 lakh per month is the AUM, and which will easily generate you 4 lakh rupees of pure profits every month. So breakdown is here up to 2.38 lakh rupees that you instantly get, 1.7 at the maturity of the basket, which is in the 12 months. So by going with the franchisee, the digital asset franchisee, even if you do not achieve this number in your very first month, it is very, very much possible to generate at least 1 to 2 lakh rupees in the first month itself. Next slide, Vibhor. Okay, so this is the comparative analysis. So what we will be doing and what you will be doing just for the mutual growth of us both. So major parts are already built in our SOP and will be taken care by Great Capital itself. The franchisee owner has some primary responsibilities only, which is already shared with us: staff hirings, then lead generation, where in both the terms we will be helping you. Customer retention, we will be helping you. Customer upselling, we will be helping you.
then the customer conversion. This is the last thing that the franchise owner has to do. Again, for this thing as well, there is a proper training and the registered certification in the place, which easily, very easily makes the customer convert. Next slide, Vipul bhai. So if I give you the roadmap, since it's a digital asset franchisee, everything goes really very fast. You don't have to wait for the months to get started. Day 1 to 3, your agreements are done. Day 4 to 6, staff hirings are done. 7 to 12, staff training and lead generation is done. It goes in parallel. Day 13 to 14, client counseling and prospecting. So within 2 to 3 days, average client closes. And starting day 15, you will be having your first profit. So starting from the day 1 till day 15, you will start to generate the profit, your very first profits. Next slide, Vipul bhai. So any questions till here? Any one of you want to ask anything? Right. Thank you so much, Anwar, for the detailed presentation. Now, I would request all the viewers, if you have any question, right? We have a, you know, a good panelist, right? We have Ashok ji as well, the consultant for this brand. In case if you will have any kind of question, you please ask, and we will take it forward. Meanwhile, I can see a few questions in the chat. Like, please also talk a bit about the company. Is it 100% owned by promoters, or there is a holding from private equity or VC firm? Absolutely. I'll come to that question. So the structure of the company is the equity is distributed among the 4 co-founders plus our VC, which is Malaysia based. Along with this, we are already in talks with Bloomberg. I think most of you who are in investment space already know about the Bloomberg. And some equity allocation is done for the Bloomberg guys. So if I split, it is right now in between the 6 different people, the total equity of the company. And the company is registered inside India by the name of Great Pro Technologies Private Limited. The registered office is in Gurugram. The official office where team sits is GMD Megapolis, Sector 48, Gurugram, 10th floor. The next question is coming here is what is the product? So how can you address that? Sure, absolutely. So since we had a limitation of time in this particular presentation, I'll just quickly give you some examples, and after that, I welcome all of you onto the secondary call where we will do the exact deep dive of the product. So if you have used the Grow app or Zerodha app, it is 90% similar to that. The investor comes onto the platform, they complete their KYC. If they get the KYC approved by the government, they are allowed to make the investments. They top up their wallet, select the different mutual fund baskets that we have, and choose the basket they want to go forward with. Make the investment, keep the investment for the desired period, and cash out and make the returns. Pretty much very simple. Anubhav, I want to ask on behalf of the viewers, it is very exciting. Like you explained, this is something like that. I am also trying to invest into it. This is something is the new and that this is a next generation idea where everyone is tempted to invest into it because everyone want to get quick return on that particular thing. So I have a few questions on that. First of all, my viewers also want to know, and I also want to know how it is different from Bitcoin, because in a digital currency domain, if you come into, the people are comparing it with the Bitcoin. So it's a virtual asset, you like you said, or the digital asset. Then can you elaborate the difference between this? And then I'll ask some following questions after that. Absolutely. That would be one of the favorite questions, Dharmender ji. So I'll talk about very first about the Bitcoin. So any one of you, like let's run a very quick guessing game. Those attending can reply into the comment section. Supposingly in year 2010, साल 2010 में you had invested just rupees 100 into Bitcoin. What do you think would be the current value of that investment? आप लोग guess करना चाहेंगे? You can type in comment section. So year 2010 आपने
यस इन करोड़ ऑफ कोर्स। कितने करोड़ अगर आप गैस करना चाहें चंदन जी? राहुल जी, आपने दिया है जवाब बट इससे काफी ज्यादा है वो। नहीं, 50 करोड़ भी नहीं है चंदन जी। कोई और अगर attempt करना चाहे। धर्मेंद्र जी, आपका क्या गैस है? It is somewhere in a billion, if I'm not wrong. बिलियन के ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ बिलियन के ऊपर कितना हो सकता है बिकॉज द वैल्यू इज So the thing is this, we because we know a little bit, but yes, definitely we are representing our investors and some prospective franchise owners. So they are having this kind of questions, and this what you are going to define the Bitcoin. The simple question here is the Bitcoin and the digital asset. How Absolutely. it is differentiating between both. So if you can answer that, that will be great for us. Absolutely. I'll just come to that question from my previous question. So I'll come it at follow-up. So 100 rupees invested in 2010 would have become 13.5 CR in today's term. 100 रुपए से 13.5 करोड़ रुपए, which is the official number. You can Google it and cross verify if I'm correct or not. So, digital asset and Bitcoin cryptocurrencies आपस में interlinked है सभी. If I give you the example, and I know why I have to do, because there has been a lot of cryptocurrency scams in India. So हम एक word use करते हैं which is drugs. Drugs could have two meanings, either the narcotics or the prescription medicine from the doctor, right? सो सिमिलरली जब हम वर्ड यूज करते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो की भी दो ब्रांचेस हो सकती हैं. इट कुड बी द स्कैम टाइप ऑफ क्रिप्टो एंड द क्रिप्टो विच इज लीगलाइज्ड इन इंडिया एंड बीन recognized by financial intelligence unit, and it is the crypto which you can report in your ITR form. सो ग्रेट कैपिटल जो है वो दूसरी टाइप की क्रिप्टो की बात करता है, विच इज द लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ द क्रिप्टो और द डिजिटल एसेट्स, which of course includes Bitcoin, Ethereum, and everything. And let me tell you, Bitcoin is right now the best investment in the world. It is not said by me, but the ex-US President Donald Trump. Then our neighbor Bhutan is very much invested into Bitcoin. And I think we already mentioned about BlackRock, which is 50% owner of GeoFinance, and it is the world's biggest holder of Bitcoin. So अगर आपको digital assets को समझना है, I think Yogesh bhai, if you can take it from here with some simple analogies. Yeah. I'm sorry, guys. In fact, I was called earlier also. I was, in fact, stuck in fact, my car broke down, so I could not intervene and I could not join. Anyway, so I coming back to digital assets. If we talk about digital assets, I guess there was a question in chat also. So digital assets can be anything digital which has value associated with this, and that value can be transacted online. Digital assets, if we talk about digital assets, cryptocurrency is one part of digital assets. Apart from cryptocurrencies, there can be digital tokens, there can be NFTs, there can be digital art, and so many things associated, anything which is digital. So I'm sure many of us from audience would have heard about NFTs. NFTs किसी ने सुना है आप में से? It is called NFTs की full form होती है non fungible tokens. In fact, if we elaborate it further, आप में से कोई भी अगर अपनी जैसे अभी हम इसी कॉल की स्क्रीनशॉट लेके इसको भी हम एक डिजिटल एसेट बना सकते हैं इफ देयर इज वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट. इवन इफ you can take a photograph of yours and you can make it a digital asset, and if that carries value, if that can be transacted. क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं we are common man. अगर हम बात करते हैं if we associated with let's take example of any celebrity. Let's suppose Shah Rukh Khan is doing any act and then that act become famous. Yesterday we were having a call with Franchise India. So I was quoting an example. I will quote an example once again. Any company which goes through a journey of say about 5 to 10 years and then that becomes very popular. Let's suppose Great Capital की अगर हम बात करते हैं, तो this is a launch event of Great Capital. And assuming that 5 years down the line, we are having a call with the Franchise India team again, and then at that point of time, हमने आज इसकी कॉल की एक रिकॉर्डिंग हो रही है. All of you can see रिकॉर्डिंग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है. तो इस रिकॉर्डिंग को हम लोग अगर रिकॉर्ड करके रखते हैं एंड वी कैन क्रिएट ए NFT ऑफ दिस, एंड हम इसको एक डिजिटल एसेट कॉल कर सकते हैं.
एंड देन अभी मे बी इसकी कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, लेकिन अगर कंपनी की वैल्यूएशन हमारी जो है ग्रेट कैपिटल की वैल्यूएशन 100 टाइम चली जाती है अगले 5 साल के अंदर में, तो हम वी कैन कॉल दैट हमने पहली रिकॉर्डिंग जो लॉन्च इवेंट किया था फ्रेंचाइज इंडिया के साथ में, वो हमारे पास में उसकी ट्रू कॉपी है, एंड दैट ट्रू कॉपी इज अ डिजिटल एसेट विच कैन बी ट्रेडेड ऑनलाइन। तो दिस कैन बी वन एग्जाम्पल। या फिर हम अगर आर्ट वर्ड से बात करते हैं, जो पेंटिंग्स हैं, आपने सुना होगा कि देर आर लॉट ऑफ पेंटिंग्स जिन बहुत वैल्यूएबल होती हैं, और उन पेंटिंग्स की भी आजकल डिजिटल कॉपीज बननी शुरू हो गई हैं। बट देन जो ओरिजिनल पेंटिंग होती है, जो कि एक यूनिक पेंटिंग होगी, वो एक डिजिटल एसेट में कन्वर्ट की जा सकती है, एंड देन दैट कैन बी ट्रेडेड ऑनलाइन। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? वैसे तो हम डिजिटल एसेट को बहुत इलेबोरेट करके बहुत एग्जांपल्स के साथ में कोट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। Is it? So basically NFTs is one example. Digital art can be another example. Digital assets हम लोग, आप लोग अगर जो इन्वेस्टिंग स्पेस में है, तो इन्वेस्टिंग स्पेस में आपने डिजिटल टोकन्स के बारे में सुना होगा। जैसे कि अब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में अभी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं पार्शियल पेमेंट में। अगर किसी के पास वन टाइम पैसा नहीं है, हमने बार एक मतलब जनवरी टू दिसंबर तक हम मान के चलते हैं कि किसी साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने 1 लाख के बजट को अगर 12 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो हम मान लो हम लोग 8,000 9,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जैसे आज की डेट में रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट में देयर इज अ कांसेप्ट कॉल RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। एंड रियल वर्ल्ड एसेट क्या है कि अगर आज की डेट में किसी के पास एक मुश्त पैसा नहीं है लगाने के लिए, लेट्स सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड यू डो नॉट हैव एनफ मनी, क्योंकि आज की डेट में जैसे अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी हमारे को 1.5 CR के नीचे नहीं मिलती है मिनिमम। तो प्रॉपर्टी की हायर रेंज तो कुड बी एनीथिंग, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुझे उस प्रॉपर्टी के अंदर में सिर्फ आई हैव ए बजट ऑफ 1.5 लाख और 2 लाख और 5 लाख रुपीस, तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन ए प्रॉपर्टी। हाउएवर if the property is managed under RWA or managed by RWA token, which is real world asset, anything related to real world, तो क्या होगा कि उस टोकन के लेट सपोज एक प्रॉपर्टी है जिसकी 1 CR टोटल कीमत है, और हमने उसको 100 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एंड 100 पार्ट्स के 100 टोकन्स बन गए, तो 100 टोकन्स के 100 ओनर्स हो सकते हैं। तो that property is owned by 100 people, and then when that property valuation goes up, let's suppose 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी 5 करोड़ की हो जाती है अगले 20 साल के अंदर में, तो उसी प्रोपोर्शन में वी कैन अर्न प्रॉफिट। तो दिस बिकम्स, ये जो RWA टोकन्स है, इसको हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोगों ने इथेरियम के बारे में सुना है, तो इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं, एंड उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ऑटोमेटिकली बेसिकली इसका वैल्यू का डिवीजन भी हो सकता है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी का भी डिवीजन हो सकता है। तो RWA का जो कंसेप्ट है, नॉट जस्ट प्रॉपर्टी, हम किसी भी एसेट क्लास के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। हमने रियल वर्ल्ड में देखा है, जैसे आजकल हमने होटल्स देखे हैं दिल्ली NCR के अंदर में, हमने सिनेमास देखे हैं, हमें लगता है कि होटल की एक कॉमन ओनरशिप है, लेकिन बैकग्राउंड में अब मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही होटल के मल्टीपल ओनर्स होते हैं, 50-60 ओनर्स भी होते हैं, उनकी पार्शल लैंड भी बेची जाती है या वर्चुअल लैंड भी बेची जाती है। तो अभी तो वो सब मैनुअली चल रहे हैं, बट गोइंग फर्दर वो एक डिजिटल एसेट के रूप में भी बेची जा सकती हैं। Sure. Thank you very much, Yogesh bhai. I think Atif, you have a point to add here. Yeah, thank you, thank you, thank you, Yogesh bhai. I think I just wanted to clarify. I think exactly the question that the people have asked in the comments is exactly what is it, right? Like, so I think the analogy that we can draw here is a similar analogy to how crypto is mutual funds are working, right? So similarly, like mutual funds have a basket of assets on the background. Similarly, we will be curating a basket of assets which will be based on certain cryptos which we think are going to be stable cryptos and valuable cryptos, right? So those aren't going to be random meme coins like Anubhav was explaining. It's not going to be Dogecoin. It's not going to be any of those. It's going to be certain Bitcoin or Ethereum or other assets like that, right? We don't intend to put any random assets. Our team is going to be very carefully curating this basket of assets, right? So that is what the core product is. I think, there was a bit of confusion there, and that is what a lot of questions in the chat was. So I think I just needed to sort of explain that right now, based on that mixture of assets that are going to be part of our basket. We will of course then, over the period of time, as the returns come, depending on how that performs, then we will calculate the returns, right? So I hope this clarifies it. If there's any questions with regards to franchisee and the relationship between the franchisee and Great Capital, I think either Vibhor or Anubhav would be taking it up. Yes.
So thank you very much, Atif bhai. I think in the meantime, I got some very much good questions in the chat. I'll quickly touch base on a few of them. So someone asked like, how is your platform transparent? So it's a really very good question. So, similar to the mutual fund industry, supposing you today invest with the Grow app and you load your funds, and once you are invested, your funds are not with the Grow app, or in any case, Grow goes out of business, your funds are not with them in the first place. तो similarly यहाँ पे हो रहा है, since blockchain is completely open and transparent, so whenever you come as an investor with the great capital, you put in your money and you start investing. Supposingly Great tomorrow goes out of business, your funds was never with the great capital, but they stay in a different account that is linked with your mobile number. तो आई से इट अगेन, जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं आपका एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है ऑन एलिवेट प्रोटोकॉल विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोटोकॉल इन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, और उस प्रोटोकॉल पे ही आपका फंड रहता है एंड वी नेवर टच योर फंड्स, एक्चुअली वी लीगली कैन नॉट टच योर फंड्स. So you are always assured, like whatever happens with the great capital, your funds are always safe and completely transparent. I think second question we got was, are you similar to Mudrex? And this is a really very good question, Chandan. So yes, in a way we are similar to Mudrex. In a way we are different from the Mudrex. I'll tell you why. So all the platforms like Mudrex, Grow, or any of these platforms, they are user managed, and Great Capital is completely managed. There's a very drastic difference. जो भी मुद्रेक्स या ग्रो जैसा प्लेटफॉर्म है, उनका एक क्वार्टर एंड में एक नंबर आता है कि हमारे यूजर्स ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितने करोड़ में प्रॉफिट बनाया. चाहे वो पूरा की पूरा प्रॉफिट उनके प्लेटफॉर्म के टॉप 2-3% यूजर्स ने बनाया हो या 10% ने, उनको उससे मैटर नहीं है. उनको यह है कि टोटल प्रॉफिट कितना बना है. बट वेन यू टॉक अबाउट द ग्रेट कैपिटल, सिंस इट्स अ फुली मैनेज प्लेटफॉर्म, हमारा ये पैरामीटर है कि हमारे कितने यूजर्स ने प्रॉफिट बना लिया है. कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाएं बस वो 1% यूजर को मिले. हम कहते हैं हम 10,000 करोड़ बनाएं और 100% यूजर को हमारे मिले. So this is the basic difference. Great capital takes the responsibility, do the management on your behalf and ensures your profits. Whereas in Mudrex and Grow app, you are on your own. आपको खुद से decision लेना पड़ता है, which is not feasible for everyone. Second question, I think I got. Here, one more question somebody has asked. So, if you are investing in digital assets, then it will be that you are investing in cryptocurrencies only. So, the answer to this question is yes, but we will be only investing in those cryptocurrencies which are performing and which we think will be performing. So, we have gained some expertise, right, from our past experiences and how the assets have been performing and how the charts of the assets, the digital assets work. So from that experience, we are, equipped enough or expert enough to first of all differentiate between what is performing, what is non-performing, and for sure we are more expert and better than the normal user who has lost the money in crypto trading. So yes, for sure, we will be only collaborating those digital assets into our baskets, which have been giving us stable result in the past. Yeah, just to add on to that, I think someone had a question as to the legality of cryptocurrency, right? Yeah. So I'm a lawyer, so I think I'm just going to explain that in very short, right? So basically, when it comes to cryptocurrency in India, there is no law passed on it, right? So India does not have a legislation which talks about cryptocurrency, which addresses cryptocurrency. There's no such law, right? So what India has done is they've only said that there's a financial intelligence unit, which is going to be the regulatory authority, which is going to give out licenses to companies that are dealing in virtual assets, right? So it's neither there's there's this notion, and people sort of have over the period of time come and ask me whether, oh, I think it's illegal, and like, why are we investing in something it's illegal, right? So it's not illegal, it's just unrecognized at this point of time, right? So there's no legal recognition to it. But as I explained, it is something that is being taxed by the Indian government, because the Indian government realized that there is a lot of money that is being made in this, right? So that's why they have that 30% tax, right? So answering it from a legal perspective, there is
it's not legal, it's not illegal, it's just unregulated at this point of time. It's not the same as being illegal, right? So I hope that clarifies the question. There's another question from Mr. Subrata. Mr. Subrata had asked that what is the core role of franchisee? So I would like to answer your question, Mr. Subrata. The core role of franchisee, in fact, if any of you have sold any financial product, be it a banking product, be it an insurance product, or mutual fund, what is expected out of franchisee or channel partner or distributor is you sell your product and get commissions for selling those products. So in a similar fashion, if you're selling insurance, since I'm from insurance industry, I have experience of over 22 years in insurance industry. So we have dealt with the channels like agent, broker, dealer, franchises in past. So I've dealt with all those channels. So the franchisee and the normal agent has, in fact, we are also onboarding intermediaries in various capacities. So franchisee gets some support from the company in terms of leads and some other supports. And expect our core expectation is sell our product, fix the commission, we'll fix a commission for you. And then whatever expertise you want to have, whatever, because this is a very new concept, normally as Anubhav earlier told that crypto mutual fund and these baskets are not very uncommon in India. In fact, earlier baskets of Indian mutual fund industry, if we talk about Indian mutual fund industry, they sell baskets associated to Indian stocks. So since we are selling basket associated to digital assets, so understand the concept from us, and our expectation is only to help us in increasing the sales. Yeah, I just want to ask this question as a follow-up question to that. If any Yes, of the person came into the franchise role, so how yeah. much investment he or she does have to do to get the franchisee, and how many employee they have to keep to work with them? So it is the operation cost, what they exactly have to have the visibility of that. And if any of the investor is coming through them, then what is the minimum ticket size to buy the Bitcoin or the digital currency in a way? So that how it's going to be. In fact, sir, whenever a new investor is coming or a franchisee partner is coming, so we are not just investing in Bitcoin. We are investing into different basket. Basket can also have, once you'll go through our app, you'll see that our baskets have different combinations. We have one basket which is a combination of gold plus digital asset. We have one basket which have purely ब्लू चिप एसेट्स. इफ यू टॉक अबाउट इंडियन ब्लू चिप एसेट, अगर हम इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं जिसमें इंडियन ब्लू चिप एसेट्स की बात होती है. तो यहाँ पर भी क्रिप्टो मार्केट के भी ब्लू चिप एसेट्स है जिसके अंदर में कंपनी इन्वेस्ट करेगी. एंड और फंड्स वुड बी डाइवर्सिफाइड. We would not have exposure only to Bitcoin or Ethereum or any other digital currencies. हमारा exposure जो है diversified रहेगा so that हम investor को optimum returns निकाल के दे पाए. And as far as फ्रेंचाइजी कॉस्ट इज कंसर्न, हमने एक प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि $3,000 इज द फ्रेंचाइजी कॉस्ट, जिसको हम 1-to-1 टेकअप कर सकते हैं. एज फार एज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, ऑल्दो सिस्टम के अंदर तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट एज लो एज $100 ऑब्वियसली. But once we'll sit with the franchisee partners or investors, we'll design a plan for you. You need to have a long-term vision. जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी अगर हम ऑब्वियसली हम बात करते हैं तो हम ऐसा किसी को सजेस्ट नहीं करते कि हम आपने 1 महीना इन्वेस्ट किया और उसके बाद में यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द रिटर्न. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है. We'll design a plan for that. And if somebody wants to go for one-time investment, तो one-time investment के लिए भी एक बड़ा optimum time है ये, because there is crypto cycles is based on basically हम digital assets की बात करते हैं तो एक तो इसमें investment cycles होते हैं. And we at present अगर हम बात करते हैं, we are at a juncture which is very optimum. And next 1 year के अंदर में बहुत अच्छे returns expect कर सकते हैं हम इसमें से. So my question was, what is the minimum ticket size to do the investment, and how the person, if want to person get out of it, so how they will encash their earning out. Sir, basically this is NAV based. जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, बेस्ड ऑन दैट आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं. ऑल्दो देयर कैन बी बेसिक लॉक इन जो कि हम उस पर अभी कंपनी कंसिडर कर रही है, लेकिन एंट्री एग्जिट के अंदर में कोई चैलेंज नहीं है. आप कभी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं तो बेस्ड ऑन कितना मार्केट मिनिमम वैल्यू. टिकट, सपोज आई एम अ रिटेल इन्वेस्टर, तो मैं कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता हूँ इसको?
I'll pass on this thing to Anubhav. He'll answer you. कि minimum investment कितना कर सकते हैं. Sure, absolutely, Yogesh bhai. I think एक करके address करता हूँ धर्मेंद्र जी आपके क्वेश्चन को. So the franchise की total cost is 2 lakh rupees 25,000, which includes everything, taxes, franchise fee, and all the setup fees. अभी उसके बाद the retail investor, the minimum allowed investment is $100, which is approximately 8,500 rupees. And the average ticket size is close to 2 lakh rupees, because once the franchisee do the counseling of the investor, does everything, so it is very highly likely कि वो at least 2 ढाई 5 10 लाख रुपए लगाएगा minimum. And about the redemption, investor can redeem the amount anytime. There are no hard lock-ins, or whenever they want they can take their money out, but we have a minimum recommended period. या आप जब जब डॉलर बोलते हैं तो सस्पिशियस क्रिएट होता है जनरल पब्लिक के दिमाग में. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लियरिफाई among all of us and the viewer for the viewers. A dollar means if I want to invest into it, आपने $100 मुझे कहा है, so should I invest that in a dollar form, or I can invest that into the INR form? So Dollar that is also the basically, purity. I'll tell you, Dharmender ji, actually, this is a very much good question. So, our majority of the clients are the HNIs, right? And जब हम उन्हें बताते हैं, या even we give them the option INR or dollar, they always choose the dollar because these guys are very smart. They know they will make the return on investment plus the dollar appreciation against INR, Indian rupees. तो उसका भी आप देखें, एडिशनल साल का 3% उनको मिलता रहता है कंपाउंडेड. सो दैट मीन मुझे अगर डॉलर में करना है तो मेरे पास रुपया है, पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, देन मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूं, या फिर मेरे पास ऑप्शन है दैट आई कैन इन्वेस्ट दैट इनटू INR. सो दिस इज समथिंग लाइक we it is indigenization of the global platform, right? And this is what we are understanding from here, from all of this. हम हिंदुस्तान में आ गए हैं, हिंदुस्तान में ही हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ही हमारे कस्टमर से जिनको हम टारगेट कर रहे हैं. अगर हम ये सारा बात कर रहे हैं तो जितने ऑडियंस है सब यही सुनना चाहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में ही ये बिजनेस कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की करेंसी में हो सकता है या नहीं. क्योंकि Sir, मेरे I'll add पास to I'll add to this point. आपके क्वेश्चन पे थोड़ा सा I'll throw some light on this. हमारा एंट्री और एग्जिट जो है INR से ही होगा. डॉलर को हम बार बार रेफर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द डिजिटल एसेट जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ ग्लोबल कंसेप्ट. और जो है, अगर हम बात करते हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक इंडियन स्टॉक से और एक ग्लोबल स्टॉक से. अगर हम बात कर रहे हैं TCS की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इन्फोसिस की, तो ये सब इंडियन एसेट, इंडियन मार्केट के शेयर्स हैं जिसको हम इंडियन रुपी में खरीद सकते हैं. एंड हम ग्लोबल, अगर हम बात करते हैं टेस्ला की, हम बात करते हैं फेसबुक की, हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स की, तो उसको हम इंडियन रुपी में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसको हम डॉलर्स में ही बात करेंगे. और जो अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स की, डिजिटल एसेट्स की रीच है अक्रॉस द ग्लोब. तो अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं. तो वैल्यूएशन जब भी हम देखेंगे ना इसकी, तो वैल्यूएशन हम डॉलर टर्म्स में ही देखेंगे. हाउएवर आपका एंट्री एंड एग्जिट जो होगा, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो INR में इन्वेस्ट करेंगे, और जो रिटर्न है उनको वो रिटर्न भी INR में ही मिलेगा. Yeah, thank you for that answer, because this is really a concern of the people, how they are going to do. लेकिन क्या है ना कि देखो वो हम सॉरी, ओवर टू यू. सो बेसिकली ये ग्लोबल कंसेप्ट है धर्मेंद्र जी, राइट, जिसको हम इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट लीगलाइज हो गया. आपको हमने जैसे ITRs वगैरह का बताया कि किस तरीके से डिजिटल एसेट्स वगैरह ऑलरेडी उसमें डाल दिए गए हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन ये है कि हमें बस एक सोर्स ऑफ फंड जो है डिफाइन होना चाहिए, चाहे वो INR में चाहे डॉलर में, वट एवर इट इज, एक सोर्स ऑफ फंड डिफाइन होना चाहिए. जब आप एंट्री ले रहे हो, एग्जिट ले रहे हो, हमें बस इन चीजों का ख्याल करना होता है कि जो लिक्विडिटी है वो किस फॉर्मेट में है. बेसिकली एक जो यूजर इंडिया से इन्वेस्ट करेगा वो INR से ही करेगा. INR से जो है वैल्यू USD में जाती है, राइट. तभी जो है क्रिप्टो, अगर आप क्रिप्टो कंपैरेटिव्स देखोगे तो हमेशा चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे किसी भी कंट्री का है, वो डॉलर फॉर्मेट में ही उसको मेजर किया जाता है, राइट. So here now, if you are understanding right, here your company help to convert that INR into a dollar, and they are going to invest further in that case. It's not conversion. It's basically it gets converted. It gets invested in a USDT form. USDT जो है वो बेसिकली करेंसी है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी मेजर की जाती है कि एक बिटकॉइन के अंदर कितने USDT.
तो बेसिकली उस यूएसडीटी वैल्यू में कितने आईएनआर आ पा रहे हैं ये आप देख पाते हैं। हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली जो करंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Okay, Right. just to looking at the time, right? I would also, I mean, since we also have Ashok ji, I mean, I would also invite him so that he can share his point of view also. Sure, Bharat. I think, thank you. I think Anubhav, Vibhor, and the entire team, it's a wonderful workshop today. And so I would like to simplify the offering for the franchisee partners. So it's a very simple business. The franchisee role, basically, he has to pay upfront franchisee fee one time. And that franchisee fee is also refundable based on the targets achieved by the franchisee. If my franchisee achieve his targets in the first 6 months, he will get his entire 2 lakh rupees invested upfront. And how he's going to make money? So his role is very simple. He has to onboard investors, the people who can invest with us, right? And on that investment, my franchisee partner is going to get upfront one-time permission, one-time payment. That's one share he will get. Second component of his earnings, basically on the annualized returns, he will get a certain percentage. And my one franchisee partner, he can start this business on his own. He doesn't require teams. So unless he has at least 100 or 150 investors or clients, he doesn't require another team member. So once he have a minimum 150, 200, 300 investors, then he require team to manage relationship with these investors, to have meetings, maintain their track records and everything. So as in how they grow in the business, they can add more team members in the business. My third point is basically advantage for the franchisee partner. It's a digital world. So there is no territory restrictions. My franchisee partner, he can be based out of Mumbai, Delhi, Bangalore, or any city. He can just find his investor. He's based out of Dubai or US or Singapore, doesn't matter. So whole world is open for him to acquire investors. One more thing I would like to add. So whatever the franchisee owners will be getting as an incentive or will be earning, that will be in real time. For example, if somebody has used franchisee owner's advisor ID to get the funds invested of any retail investor, once that transaction has been done, automatically at that same point of time, you get your commissions of that is 7% to 12%, right? Depending upon on which basket the retail investor has invested. Right. Any more questions the potential franchise owners will be having, right? So we can set up a call separately, right? And answer those questions so that we fact, have more clarity over the product. Vibhor, I'll take 1 more minute on this point to emphasize more, because I've been from financial industry. I spent 22 years in financial industry. So in fact, I would like to ask this from people available on this call. Anyone who is part of financial industry, who has sold financial products like insurance, mutual funds, or banking products, banking corporate FDs, anyone here who has sold these kind of products earlier on franchisee basis or agency or channel, any channel capacity? Is there anyone? Yes, Yeah, I guess Chandan. तो चंदन जी, I would like to ask you, आपने अगर आप कॉल पे आ सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो आप if you can have, चंदन जी आप हैं लाइन पे? Yeah, so I'll answer. अगर चंदन जी आप हैं ना, मैं बेसिकली ये जानता, आपने कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल किए हैं अर्लियर? Okay, Chandan ji can speak, I guess. एनीवेज, तो मैं कंक्लूड करता था इस बात को, अगर हम किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इसको रिलेट कर पाते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ में, तो अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, विभोर ने जो पॉइंट बताया कि वी पे अपफ्रंट 7% कमीशन, अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जो हाईएस्ट स्लैब्स होते हैं, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू बीइंग सेल्स गाइस, यू मस्ट बी की किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी तो बिजनेस के हिसाब से इसके कमीशन स्लैब्स बढ़ते जाते हैं। तो सिमिलरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में भी
अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में कमीशन की बात करते हैं तो नॉर्मल पैटर्न में हम 0.50-0.75% से कमीशन शुरू होते हैं, विच गोज अप टू 2%। एंड जो 2% कमीशन होते हैं वो बहुत ही जो क्रीमी लेयर होती है अक्रॉस द कंट्री, अगर हम बात कर रहे हैं, वो गिने चुने लोग ही होते हैं जो उस परसेंटेज को टच कर पाते हैं। जो 1.5-2% की परसेंटेज होती है वो जो हाई स्लैब पे होता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग स्लैब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपफ्रंट 7% पे कर रहे हैं, जो कि अगर हम हाईएस्ट स्लैब के से भी कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट के हाईएस्ट स्लैब से भी, दैट इज 3 times मोर कमीशन। इनफैक्ट अगर हम एवरेज कमीशन की बात करते हैं तो एवरेज कमीशन इंडियन मार्केट में 1% या उससे नीचे रहती है। अगर 1% को भी मानते हैं तो हमारा कमीशन का जो स्लैब है, वी आर पेइंग 7% अपफ्रंट कमीशन। एंड मोर ओवर जो इंडियन मार्केट में कमीशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बिजनेस रहता है, जैसे चंदन जी का जवाब आ गया, यू आर वेरी राइट। तो एक हमारे को बेसिकली एक कॉन्फिडेंस भी मिल गया, चंदन जी अपने बाकी एसोसिएट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, नॉर्मली जो कमीशन साइकिल होता है वो होता है कि 1st ऑफ द मंथ टू 30th ऑफ द मंथ। जैसे हम अभी अक्टूबर मंथ में बैठे हैं, तो एनी बिजनेस डन फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर टू 30th ऑफ अक्टूबर, उस बिजनेस के बाद ऊपर जो कमीशन क्रेडिट होगा वो सब्सिक्वेंट मंथ में होगा, जो कि मिड ऑफ द मंथ के आसपास होता है, नॉर्मली 10th और 15th के आसपास। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम एक महीना भी नहीं ले रहे, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द डे, जो भी बिजनेस है हम रियल टाइम में आपको कमीशन ट्रांसफर कर रहे हैं। रियल टाइम में आप उस फर्दर पैसे का यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर। जैसे मैं सुन रहा था, जैसे धर्मेंद्र जी बोल रहे थे और एक दो लोगों ने और बताया कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम अपना इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव स्पेस दिख रहा है। तो फ्रेंचाइजी पार्टनर का अपना भी इंटरेस्ट बन रहा है कि चलो हम इन्वेस्टर से तो बाद में पैसा लगाएंगे, पहले हम खुद लगा के देखना चाहेंगे। तो आई वुड वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप लोग खुद भी इन्वेस्ट करें। एंड एक और जाते जाते एक और आज की जो है मैं इसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली जो ये 7% कमीशन की हम बात कर रहे हैं, इस 7% कमीशन को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज एक फ्रेंचाइजी पार्टनर ने, हम एग्जांपल देते हैं, 1 CR का बिजनेस दिया हमारे। 1 CR के बिजनेस के ऊपर लेट सपोज वो 1 CR किसी एक आपके क्लाइंट से भी हो सकता है और 10 क्लाइंट से भी हो सकता है। अगर 10 क्लाइंट से दे रहे हैं तो मान के चलिए आपने 10-10 लाख के 10 क्लाइंट लिया और 1 करोड़ का हमने आपने पहले मंथ में हमें बिजनेस दिया। रियल टाइम में उस 1 करोड़ के ऊपर में आपको 7% कमीशन मिल रहा है, विच टर्न्स अप टू 7 लाख रुपीज। अब आपके पास ऑप्शन है, उस 7 लाख को आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उस 7 लाख को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं आप हमारे पास एज आप अपने अपने अकाउंट के अंदर में। और अगर आप उसको 1 साल देते हैं तो वो 7 लाख के ऊपर में भी लेट सपोज हम 50% अप्रिसिएशन मतलब आपको रिटर्न देते हैं, तो वो 7 लाख भी आपका 10 लाख बन जाता है 1 साल के अंदर में। दैट इज प्योरली फ्रेंचाइजी कॉल। लेकिन हम इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। यू कैन डिजाइन और ओन स्ट्रैटेजी की। मान लो हमने 7% इन्वेस्ट किया, उससे 3.5% आप विड्रॉ कर लो, 3.5% अपने एक एसेट अलग से अकाउंट बना लो, उसके अंदर इन्वेस्ट करते जाओ। तो देर कैन बी वेरियस वेज एंड मीन्स टू मल्टीप्लाई योर कमीशंस आल्सो। Anything else? So I guess just looking at the time, समय को ध्यान में रखते हुए, I understand this concept is new, right? We will again, I will have 100 questions. ये 2-3-4 घंटे भी जाए तो भी तो कम है. But still, I mean, it was a good session. In fact, almost everyone asked all their queries. And of course, we will keep on happening these. We will keep on organizing these kind of webinars, right? अगर जरूरत पड़ी तो we will again do an internal training for our internal team. For the viewers, you all can get in touch with us by connecting to our hotline number, that is 9717683838. I already have shared this in the chat box, or you can write to us at feedback@franchiseindia.in. So that's it for the day. I would like to thank all the viewers who participated in this webinar and asked your queries. And at the same point of time, I would also like to thank you all the panelists who joined this webinar and shared the very great information about this new concept, especially Vibhor, Anubhav, Atip, Yogesh ji, Rahul Sharma, Dharmendra Rathore, I mean, who was coordinating, on behalf of the investors, and Ashok ji also for, sharing his point of view on in terms of financials. So that's it for the day. Thank you so much, everyone, for joining. And tomorrow again, we will come up with a new brand at 12 o'clock in the afternoon, and we will share another. Just Bharat ji, one more thing. If anybody has, maybe there are some questions regarding which left unanswered. Maybe the information has been missed or whatever it is. So we can conduct a separate call with everybody who was here, right? Sure.
So any confusions regarding our franchise, regarding the products, services, the industry, we are happy to answer. Thank you so much. Right. So whosoever joined, obviously you already have shared on your numbers. We will get in touch with you. We will call back you. And in case if you would like to get in touch with the brand and have a discussion in length, yeah, of course, we will have a very good platform and we all can discuss it. Yep. So yeah, we are expecting more and more calls related to this brand, and we will of course discuss more about this. Thank you so much, everyone. That's